Good morning, sir. Good. Please sit. Thank you, sir. Sourabh Mishra, Yes, sir. how are you? Sir, I'm fine, sir. Fine. Yes, sir. Ready for interview? Yes, sir. Okay then. Tell us something about yourself. Sir, I'm Sourabh. Yes. Sir, I come from Bhubaneswar, Odisha. I have done my 10th and 12th in Odisha, and after that, I've done my graduation from Srinagar in civil engineering, of course. I had an inclination towards government jobs, so I did not take any placements there. And since then, I've been preparing for this exam, and this is my third attempt, but seriously, this is my second attempt. And this time, by God's grace, I've been able to come to the interview stage. Other than that, I have mentioned my hobbies as well, sir. That I like following cricket and football, and I have a particular interest in music, sir. Music. Yes. Okay. Now, what is famous about Bhubaneswar? Sir, Bhubaneswar is famous as the capital of Odisha, firstly. Yeah. And other than that, it is the seat of many temples and other ancient architecture that is found. That is the Kalinga architecture. And it was also the scene of the Kalinga War in the ancient times, in the Ashokan era. Okay. Now, what about the Nandan-Kanan one? Is there is any? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Nandan-Kanan Zoo is famous in the state. It is the only zoo in our state, and it's located in the state capital itself, sir. Now, tell me, what is the use of this PIN code number 751024? Can you explain the significance of these 6-digit numbers? Sir, actually, 7 is our state's region. It demarcates that it is in the eastern part of the country. Yeah. And in addition to that, the other codes, they are specifying the city. The second letter is specifying the city, and the last 4 are for the specific region, the exact locality. Is it correct? Yes, sir. That is what I believe, sir. Okay. Then you have given Central Engineering Services as first preference, Yes. right? Yes. Then Indian Skill Development Services as a last preference. Yes, sir. Before filling this form, you have collected some information about all these posts. Yes, sir. I have. Okay, tell me about Indian Skill Development Service. Which type of service belongs to which ministry? Yes, sir. Sir, it belongs to the skill ministry, particularly concerned with the Make in India plan of the Okay. Honorable Prime Minister. Sir, since there is not much history regarding this, this is a recently inducted service. Therefore, I have not really gathered much data as to how it could be applicable to our domain, that is civil engineering domain, and that is the reason I have placed it at last. As far as civil engineering is central engineering services are concerned, as my first preference, Okay. I believe, sir, that I was very fascinated by the Central Vista project when it was taking place. And in those times when I started preparation, there was also this discussion that we are building a parliament in Afghanistan, and that is also being done by CPWD. So I saw the vast range and the scope there. Therefore, I preferred that as my first preference, sir. Means you have collected information for all. Yes, Post. sir, I have. Yeah. I have. Means it is your good decision, according to I you. believe so, sir. I believe so. Okay. What are the technical reasons behind accidents? Sir, accidents are mainly caused because of, there can be various reasons. One of the reasons is the condition of the roads. Yeah. The second could be the driver profile, the state that he is in. The second could be the vehicle condition, the fitness of the vehicle. The third could be the manning that is present, whether the junction is unmanned or manned. In addition to that, the improper planning by the urban authorities, that also could be a reason. As far as the nighttime accidents are concerned, maybe because of proper lighting not being available, that could be a reason. In addition to that, there is a lack of monitoring. For example, there are lack of CCTV cameras, like in other European countries. There are digital speedometers that are installed at the sides of the road. Although all of that is changing under the current ministry, we are also installing a lot of speedometers across the country. But we need to do more in order to prevent accidents. Suppose we are giving you authority, Yes. then do you have any plan how you can avoid these accidents Sir, we could, we are as actually, a civil engineer?
Sir, we have launched apps. The ministry has launched apps where it is definitely connected to the bump integrator readings. So these bump integrator readings are directly, these reading data are collected and they are sent to the app itself. And now when they are analyzed, we could provide the corrective measures there. For example, if there are a lot of bumps, we could do the patchwork there. We could have, for example, if there is congestion there, so we could also monitor that and we could add lanes, and we could take corrective measures like that, sir. यार now these days ना breakers, Yes. आपने भी सुना होगा ना ब्रेकर्स के बारे में. Yes, sir. पूरे इंडिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी ट्रैवल कर रहा हूँ, साइजेस ऑफ ब्रेकर्स आर डिफरेंट. हाँ सर. लेकिन मेरी गाड़ी चलाने की स्टाइल तो एक ही है ना. हाँ सर. आई एम नॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियर. मुझे तो बड़ा ये लगता है कि कैसे साइज बना रहे हो. हाँ सर. तो और कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि पूरे ब्रेकर्स हटा दो, कभी होता है लगा दीजिए. व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस ब्रेकर? इज देयर इज एनी स्टैंडर्ड साइज फॉर दिस? सर, स्टैंडर्डाइजेशन डिपेंड करता है जो भी मैन्युफैक्चरर है उस पर. Okay. तो देर इज़ नो स्टैंडर्ड साइज एज सच. लेकिन सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BN कैप इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे कि उन्होंने ये चीज़ पे ध्यान दिया है कि हमारा जो कार है वो सेफ्टी प्रोसीजर्स को मीट कर रहा है या नहीं. इनफैक्ट कल ही हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अभी कार में जो अभी का जो कार स्पेसिफिकेशन है, हम लोग 6 एयरबैग्स देते थे, अभी वो 6 से हमने 4 कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही वो टेस्ट करके आता है. तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑल्दो ब्रेकर साइज इज सिग्निफिकेंट, आई थिंक सिंस हम लोग इतना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, आई थिंक एनी ड्राइवर हु इज़ अ गुड ड्राइवर एंड इज ऑफ साउंड माइंड, दैट इज इंडिकेटेड बाय द वे उसको लाइसेंस मिला जिस क्राइटेरिया से, आई थिंक ही विल बी एबल टू मैनेज ड्राइविंग ऑन द रोड. सर यार हम लोग रोड की कंडीशंस तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना. यस. रोड एक्सीडेंट्स अवॉइड नहीं हो रहे हैं. Yes. ऊपर से हम चंद्रयान मिशन कर रहे हैं. यस सर. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चंद्रयान मिशन? प्लीज टेल मी व्हाई वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट फॉर दैट. सर, चंद्रयान मिशन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो देश का जो प्रोफाइल है उसमें वृद्धि होती है. और इन एडिशन टू दैट, चंद्रयान मिशन के द्वारा सिंस इसरो का नाम बढ़ता है और इसरो के जो बाकी देश हैं उनका भरोसा बढ़ता है, जिससे कि इसरो बिजनेस लाता है इंडिया के लिए. इसरो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किया था उन्होंने. समवेयर अराउंड 130-140 सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड. तो मेरा ख्याल है कि उससे जो पेमेंट मिला है, हमें उससे प्रॉफिट हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जिसका फिर हम लोग उपयोग सोशल वेलफेयर में कर सकते हैं. क्या आपके सिविल इंजीनियरिंग में ये हेल्प करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या इससे हम रोड एक्सीडेंट्स या और कुछ हम फैसिलिटेट कर सकते हैं? सर बजट एलोकेशंस उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट. और एक्चुअली अभी जो भी हम एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं मिनरल्स और ये सब के लिए, आई थिंक ऑल्दो थोड़ा फार स्ट्रेच हो जाएगा. अगर कोई सब्सटीट्यूट मटेरियल भी मिल जाता है जो कि लो कॉस्ट का होता है, तो मे बी वो भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं रोड और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में. Okay, thank you, Sourabh. Okay, hi Sourabh. Sourabh, you have done your BTech from NIT Srinagar. Yes, sir. So when you are traveling there, when your holidays are there from your home, Yes, so sir. you go by air. Yes, sir. So where is the airport? In which district? It is in Badgam district, sir, in Srinagar. Okay, it is the Badgam district. Yes. So have you ever been to Pahalgam, Gulmarg, Sonmarg? Yes, sir, I have. To all these 3 places? Yes, sir, I have. Suppose you are moving to Pahalgam, then beside the road there is river also going in the same direction, na? Yes, sir. So if you have only the topographical map of that area Yes, sir. plus the engineering tape, and you have to roughly calculate the discharge of that river, Yes, the sir. river which will be besides the road in Pahalgam. So how you will be finding the discharge? Sir, if I only have a tape. Tape and the topographical map where the bed slope is given. And you don't have to tell exact, rough calculations or rough values you can tell. So which formula or which method you will apply? Sir, I'll fix 2 points, and then after that I'll estimate the distance between the 2 points that will be fixed. I'll check the depth from the topographical map, and I'll take a unit width, and from that I can get a rough idea of what the discharge per unit width will be. Okay, good. Saurabh,
in surveying, you have studied astronomy, latitude, longitude, and all. Yes, sir. So India's GMT is plus 5:30, na? Yes, sir. What does that mean? Sir, we are 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time, which is at 0 degree longitude. Okay, where is Greenwich? Greenwich is in UK, sir. In London, UK. Yes, sir. Okay, so suppose there is a match at 2 p.m. in Greenwich, Yes, sir. and you want to see that match. Yes, sir. So at what time you will open your TV in India? 7:30 p.m., sir. 7:30 p.m. Yes, sir. So why India's GMT is plus 5:30? Why not plus 5? Why not plus 6? From where this magical figure come, plus 5:30? Sir, for every 1 degree longitude, we account for a time increase of 4 minutes. Since we are placed east of Greenwich, and we know that the Earth rotates west to east, therefore the time increases. Why? Because the sun reaches first in the eastern part. Japan is known as the land of Okay, rising that sun. is the reason of plus. Yes, sir. But That's- why? What is the reason of 5:30 only? Sir, because we are at 82.5 degree east, so 82.5 into 4 will give that much. 3:30. That is 5:30. Yes, sir. Okay, good, excellent. From where the 82.5 degree longitude passes Yes. from India? Sir, it is mentioned in some books as Allahabad and in some books as Mirzapur. Mirzapur. So I think Mirzapur is the more accurate one. Okay, excellent. My last question on this topic. Yes, sir. A country's GMT is plus 5:30 like India. Yes, Pakistan is plus 5 Yes, sir. because it is towards west. Yes, sir. Some countries will be minus 3, that will be North America, South America. Yes, Some minus 3:30, plus 8, minus 9:30. Why a country's time is only in the multiples of 30, plus 5:30 or plus 6 or plus 7:30 or minus 3 or minus 4:30? Why you have not seen plus 5:25 or plus 3:15? Sir, practically that is the case, that some places will definitely have that kind of a time. But in terms of reporting the actual local time for a region, it has to be done so that it is convenient to the people who use it. And for example, since we have fixed the center as Greenwich and we are fixing it with respect to that, if we are not giving whole figures, absolute figures, it will cause a problem of inconvenience. The same way in civil engineering, if I correlate to it, sometimes the sample is not, for example, we fix the grades of concrete. It is always in the multiples of 5. That is also done for simplicity, sir. So I believe it is done for simplicity. Excellent. That is why the reference longitude is taken as the multiple of 7.5. 7.5 into 4 will be 30. Yes, sir. What is the foundation of Burj Khalifa? Sir, I am not sure. Shallow or deep? Sir, it has to be deep. It has to be deep foundation. Yes, sir. Okay. In recent news, it has been observed that Shimla is sinking or there is so much landslides there. Yes, sir. 4 to 5 months back, the same thing is happening in Joshimath also. Yes, sir. So what is the primary reason for that? Sir, primary reason is the depletion of groundwater that is causing all this problem. And in addition to that, as far as Depletion of groundwater. Yes, sir. So depletion of groundwater will increase effective stress or decrease? It will increase the effective stress. So strength will be increasing in that case. Yes, sir. But the level, because since there is higher construction there, sinking is more. And due to sinking, what happens is that the walls, the foundations, they lose contact with the soil, due to which the subsidence takes place and cracks are formed in the walls. As far as Shimla is concerned, sir, this year we have had improper distribution of rainfall, and as such the carrying capacity of Shimla has been exceeded. So Shimla is a case where the soil is losing its shear strength very rapidly because we are constructing more as it is, and obviously there is this problem of the groundwater depletion. So due to this, sir, all these problems of landslides and floods are occurring. Okay, in which earthquake zone Delhi is? Delhi is in zone 4, sir. And your Odisha, Bhubaneswar? Bhubaneswar is in zone 3, sir. And Srinagar? Srinagar is in zone 5. Okay. Zone 1 is also there? No, sir, not anymore. That was Okay, revised. earlier it was there. Yes, sir. Okay. Suppose there are two vehicles, vehicle A and vehicle B. Vehicle A's retardation when it applies brake is 10 meter per second square. Yes, sir. Vehicle B's retardation is 2 meter per second square. Yes, sir. Both the vehicles are moving in the same road, same velocity,
same kind of driver, same brakes. Yes, sir. So when they will apply brake, which vehicle will stop first? Retardation of 10 meter per second square or retardation of 2 meter per second square? It's 10 meter per second. 10 square. because uska retardation ज़्यादा है, it will stop earlier. हाँ, sir. Now tell me the formula for stopping side distance. Stopping side distance. It is 0.278 V into TR plus V square by 254F according to IRC. Correct. In this formula, there is no term of retardation, not a single variable retardation. Yes, sir. But still, which is having higher retardation is stopping early. Yes, So sir. इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है? In actual practice, having more retardation, stopping side distance will be lesser. हाँ. But in the formula, that is not coming. And that formula is not empirical, derivable formula. हाँ, sir. So mistake कहाँ हुआ? सर मिस्टेक यहाँ पे हम लोग एब्सोल्युटली उसको स्टॉप करा रहे हैं व्हीकल को, जबकि रिटार्डेशन को तो हम लोग अकाउंट भी नहीं कर रहे हैं जब व्हीकल एक्चुअली मोशन में था। और एक मतलब v माइनस यू हम लोग लेते हैं फार्मूला में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन व्हाट द फाइनल वेलोसिटी विल बी। दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी को 0 ले रहे हैं हम लोग, तो कहीं पे अकाउंट ही नहीं हो रहा है। और वो जो नीचे वाला फैक्टर है 2gs, वो भी हम लोग g नहीं ले रहे हैं, हम लोग f के बेसिस पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय IRC, तो वो टर्म ही हम लोग कंसिडर नहीं करते। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर आई थिंक सो सर। How much percent sure you are? सर आई एम 80, 90, 100, 0, minus 20. सर आई एम 70% श्योर। Okay. In the formula, there is a term f, यस सर। and f is ag. यस सर। F mu is a into g, so a Yes. is coming now in the formula. यस सर इट इज। Okay. Got? यस सर आई गॉट इट। Okay. Thank you. So, Saurabh, Yes, sir. first of all, my question to you is, what do you understand by when we are talking about friction, Yes, sir. rolling friction and sliding friction? What is the difference? सर आई एम नॉट श्योर सर नाउ। Okay. So, what is the difference between truss and frame? Truss will carry only axial forces, Okay. while frame will carry axial force, shear force, and bending moment as well. Okay. When we already have beams to bear the load, why we come up with truss and frame? Sir, because trusses are more economical because they are for longer spans. When we use the beams, they get a bit uneconomical because a lot of concrete has to be used. While truss are steel structures, so in long terms that is more beneficial for So, us. if we don't have any problem with financials, can we prefer beams for the long distance also? No, sir, because the movement will come in that which will exceed the permissible limits of the strength of concrete. Okay. So, when we are talking about this column, Yes, sir. so you must have studied the term core, kern. Yes, sir. So, what is that? So core is basically that, as far as the diameter of core goes, it's diameter of the column minus 2 times of clear cover. So that is the internal part of the, which is confined by the helical reinforcement, that is the core. So, when we are talking about principal stresses, Yes, sir. how you will define that? Principal stresses, these are the stresses on that plane which is devoid of the shear stresses. Those are the principal Which stresses. is? Which is not having the shear stresses. Okay. So, what are the planes of maximum shear? Planes of maximum shear, these are the ones where these are the ones that are inclined at 45 degrees to the principal planes. So, is normal stress 0 to the plane of maximum shear? Not necessarily. It is the half value of the sum of the maximum and minimum principal stress. Okay. So, when we are talking about Mohr circle, Yes, sir. for 2-dimensional state of stress, we make Mohr circle. Yes, sir. So, when we will be making for 3-dimension, will it be a sphere? No, sir. It doesn't have to be a sphere. Then? We can make 3 more circles, taking two pairs of 2 in Okay. 3 axes. Okay. And when we are talking about stress strain diagram, Yes, sir. you would be aware of strain hardening region. Yes, sir. There the strength of material increases. Yes. What is the reason behind that? Sir, it is because steel, as we know, is an alloy that contains carbon.
Okay. And when the strain hardening region is reached, the voids are occupied by these resistant carbon molecules, which prevent the further stretching. And at that point of time, what happens is that as the strain keeps on increasing, the resistance to the material also keeps on increasing, because the voids are now occupied by the carbon. There is a term for this, that is Cottrell atmosphere. Cottrell atmosphere is formed, and this causes the strain hardening, sir. Don't you feel this is the reason for 2 yield points? Yes, sir. In mild steel, that is the reason, sir. So you defined it for strain hardening region. Strain hardening and 2 yield points are different things, Yes, sir. sir. They are different. So whatever you defined is for strain hardening or 2 yield points? Sir, what I explained was for 2 yield points. For strain hardening, the reason is the occupation of interstitial sites by the carbon molecules. So if that is the reason, then medium carbon steel, high carbon steel, they are having more carbon. Yes, sir. So their strain hardening should be more in that case. Sir, but there the voids are already having a lot of carbon. Here the voids are not having that much carbon in mild steel case. So therefore it does not make any difference there. Then from where carbons are coming to fill the void? When already you are saying carbons are present. Yes, sir. Then from where other carbons are coming and filling the Sir, because voids? as deformation increases, the voids start opening up, due to which the carbons are able to enter. Okay. So what is the difference between engineering stress and true stress? Sir, engineering stress and true, sir, we work on engineering stresses always, but true stresses are somewhat higher as what we report. I'm not able to recall right now, sir, but that is what I can recall. Okay, can we measure the stress? We measure it, yes, sir, we can measure it. By which device? Sir, the CTM machine, there is some. Do you know about strain gauge? Yes, sir. Yes, sir. So what it measures? The strain, sir. Can the it plane. measure the shear strain as well? Sir, it cannot measure the shear strain. It can only measure the principal strain. We can find out the shear strain if we have the data. Okay, so we can find out the principal stress with that. Can we find out volumetric strain by this? Volumetric strain can be found if we have EX, EY and EZ. So 3 strain gauges. Yes, sir. 3 will be required. Okay. So one more question is, like whenever we are talking about center of mass, Yes, sir. center of gravity Yes, and sir. centroid, Yes, sir. they are same or different? For a solid body, they are the same, but where the distribution of mass is different, they are different. Center of gravity will have the additional term of G, which will obviously depend on the gravity at different points on Earth. Center of mass is dependent on the distribution of mass, same as that. And centroid is a geometrical property, sir. It's mainly for 2D figures, centroid. Okay, centroid is not there for 3D? Centroid for it's there for 3D as well, but that is called center of mass, center of gravity. Fine, sir. Hi Saurabh. Yes, thank you. So you have done your graduation from NIT Srinagar. Yes, sir. Srinagar is a beautiful place, Yes. right? Any river flowing across Srinagar? Sir, Jhelum River. Jhelum River. What do you understand by the term hydraulic mean depth? Sir, it is A by top depth, area of the cross section by top depth, And top width. Sorry, sir. top width. Yes, sir. Is it different from hydraulic mean diameter? Hydraulic mean dia is defined in Reynolds formula. It is given by the formula 4A by P. So that way, definition wise, it's different. What is the significance of hydraulic mean diameter? Hydraulic mean diameter is actually, as far as Reynolds number definition is concerned, that goes by rho v d by mu, where d is the hydraulic diameter. This hydraulic diameter can be different for different things. For example, for pipe, we take it as dia of the pipe itself. But for example, if it's not a circular thing, let's say it's a rectangular thing, in that case also we can approximate to a pipe for something that has a circular shape by the use of hydraulic diameter, sir. So that way it can be used. How do we find out losses in a pipe?
Sir, we do that. There are two kinds of losses. One is the major loss and second is the minor loss. For major loss, we use the Darcy-Weisspieß formula, which is FLV square by 2GD. And for the minor losses, again, there are for sudden expansion, for sudden contraction, for entry, exit, for bends in pipes, all these formulas we use, sir. Can we find the loss in a nozzle using the Darcy-Weisspieß equation? Yes, sir, we can. We can. Yes, sir. What are the constraint or what are the assumptions or the condition for using Darcy-Weisspieß equation? Sir, the flow should be laminar and the dia should not change because there is only one. The pipe should have some finite length. These are some of the criteria. You are saying diameter should not change, but nozzle is having a variable diameter. Yes, sir. Then, Sir, in that case, we'll have to use integration. okay, we have to use the integration, and the flow should be laminar. Yes, sir. What is laminar flow? So laminar flow is that kind of flow in which a layer of fluid will flow. They flow like layers, one layer on top of another. There is no momentum transfer between the two layers in case of laminar flow, sir. Okay, and what about turbulent flow? In turbulent flow, they don't flow; they interfere with each other, and momentum of flow is transferred between the layers, sir. Okay, can we draw a streamline for turbulent flow? Do the turbulent flows have streamlines? Sir, I'm not aware of this, sir. I'm not sure, sir. Sorry, sir. Okay, why laminar flow is also called as streamlined flow? Do you know that? Sir, I can take a guess. Sir, because since the streamlines, one of the property of streamlines is that they never intersect with each other. Therefore, they are known as streamlined flow because the layers never interfere with each other. Why the streamlines never intersect with each other? So, because the tangent at any point will give the velocity of the flow at that point of a streamline. So, if they intersect, one point will have two velocities, which is not possible. Okay, and path lines, can they intersect? So, path line can intersect because that is the path traced by a particle, and that can come back to its own point. So, that can intersect. What is timeline? Sir, I'm not aware of it, sir. Not aware. Sorry, sir. Okay, and you like playing and watching cricket. Yes, sir. What do you like most in cricket? Sir, I follow India's matches whenever India plays. So, India's matches and mostly tests and T20 cricket I like. Okay. What is flow separation and how it is a problem in bowling or cricket? Sir, flow separation is that point where the velocity gradient at the bottom, the velocity increases. The velocity increases due to which the pressure increases due to the decrease in velocity, and due to this what happens is eddies are formed. This causes the flow separation. In cricket, I think it has something to do with the Magnus effect, the swinging of the ball, where they use that phenomenon in which they decrease the velocity in order to increase the pressure so that the ball traces a path away from its original path. Okay, and you also like reading the newspapers. Yes, sir. What was the best news for today in the newspaper? Sir, today the best news was that the Prime Minister said we had become a part of National Global Biofuel Alliance that was announced in G20. So, India will be a key player now in establishing the renewable forms of energy. What is biofuel? Biofuel is a fuel that is mainly derived out of ethanol. In India's context, we are planning to replace petrol with 20% ethanol content. So that is the first generation ethanol fuels.
So that is the biofuel. What will be the advantage of using ethanol in petrol? Sir, the combustion that will release more carbon dioxide into the atmosphere, that will go down, and this will cause less pollution, and therefore our country's target of achieving net zero by 2070 will be, it will help to that. In Paris also, the climate change the climate accord that they have signed, that can also be reached faster, sir, by these initiatives. All right, fine. Thank you, sir. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you, sir. Saurabh? Yes, sir. Is it your first interview? Yes, sir. Right. It is first mock interview? Yes, sir. Yeah. And before that you have cleared the, you have attempted mains examination, or it is first time? First time, sir. First time mains, then you have cleared mains and then appeared. Yes, Going to appear for interview, ना? हाँ. Okay. सौरभ, बाकी तो आपने ना जवाब अच्छा दिया है. Okay. ना? मैंने भी यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है ESE के. Hmm. तो आपने जितने भी जवाब दिए ना, वो तो परफेक्ट है जनरल वाले. Yes, sir. लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ, आप अपनी तरफ से बताओ, क्या आपने टेक्निकल, जब सर सभी ने क्वेश्चंस पूछा या मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, Yes, तो आपने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसमें लगता है कि आपको नहीं पता था, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया कि चलो मैं थोड़ा सा इससे जस्टिफाई करता हूँ? हाँ सर. कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे? सर वो फ्लो सेपरेशन क्रिकेट वाला सवाल सर का था, वो केस किया था. हाँ. और शिमला में क्या प्रॉब्लम है, जोशीमठ वाला प्रॉब्लम मुझे उतना अच्छे से नहीं याद था क्या था प्रॉब्लम. और सर वही दोनों भी याद आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा. जब पिन कोड का जो आपने अटेम्प्ट किया था वो भी एकदम परफेक्ट, वो नहीं था सर, वो वैसे मतलब नहीं आपको था, पता था? हाँ सर. हाँ, मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ना आप, और आपने यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक में उड़िया एंड हिंदी लिखा है. हाँ सर. अच्छा, यहाँ पे आपके दो ही चॉइस थी, और आपको इंग्लिश तो खैर आप टेक्निकली साउंड हो इसलिए आपने नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया. हाँ ठीक सर. है, राइट. एक ये है कि जब आपको लग रहा है ना कि आंसर में आप एकदम क्लियरिटी नहीं है, हाँ सर. तो आप ये ध्यान रखना कि स्पॉइल हो सकता है इंटरव्यू. कि अगर वो आपके देखिए 30 मिनट्स है, आपको प्रूफ करना है, तो अगर आप 5 मिनट्स भी गलत डायरेक्शन पे ले गए उसके, तो वो हो सकता है कि कोई और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के आपके पूरे उसको स्पॉइल कर दे. Yes, हमारे पास एक की वर्ड है सॉरी. अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं बता पाओगे उसको, तो छोड़ दीजिएगा. ओके सर. ठीक है ना? जैसा आपका टैलेंट है ना, कहीं पता चल रहा है कि उसमें आपका टैलेंट पूरा खराब ना हो जाए. ओके सर. ठीक है, सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, आप फिर जहाँ कंफर्टेबल हो, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिस पर आप जो अच्छा जो भी आप आंसर दे रहे हैं, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जो हुई, आपको लगता है आपने सही सब जवाब दिया सर. मतलब मुझे जितना आता था मैंने है बोला ना? सर. हाँ, तो वो जो आपके वो स्टाइल ठीक है, लेकिन आप और आंसर्स पे समय कीवर्ड्स को थोड़ा स्ट्रेस देकर यूज़ करें ताकि बाकी लोगों का भी ध्यान जाए. ओके सर. और थोड़ा बीच में ना, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, हाँ तो सर. ठीक है, बहुत मेजॉरिटी टाइम तो आप उनको ध्यान दीजिए, लेकिन हम बाकी लोग भी हैं. ओके सर. मतलब जैसे मैं आपसे कोई डाउट पूछ रहा हूँ, समझ लीजिए कि आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, ओके सर. और आपसे सर ने पूछा या किसी ने पूछा, तो कोशिश कीजिए कि आई कांटेक्ट एक बार बीच में सबसे हो जाए. ठीक है सर. बहुत लंबे समय में आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा ना, तो हाँ. ऐसा लगेगा कि बाकी लोग फिर अपने उस पर आ जाएंगे आपके आंसर को उतना अच्छा. उनका भी अलर्ट रहना जरूरी है ना. ओके सर. अगर आप नहीं देखेंगे तो हम अलर्ट नहीं हैं, हम अलर्ट नहीं है तो आपके आंसर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे. यस. दैट इज़ फ्रॉम माई साइड सर. ओके. सौरभ, अब लिखो, आप लिख रहे हो ना, एक तो लेग मूवमेंट आपको रोकना है. ओके. आप लगातार अपना पैर, शेक कर रहे थे. हाँ, और इसमें और शायद वो- चेयर का हाइट का कुछ इश्यू है, क्योंकि आपने जैसे एडी उठा के रखी है ना, दैट इज व्हाई इट हैपेंड. अगर आप पूरा फॉर्म रखो, फॉर्म रखते हैं आपका पूरा तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस तब नहीं होता. हाँ, इन्होंने ऊपर उठा रखा था तो वो लगभग होता है. थ्रू आउट ये चीज थी, और ये अब सब थ्रू आउट आप पैर वो कर रहे थे. आप पूरा आपको जमीन पे पूरा रखोगे तो वो प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है. ठीक है. ओके सर. और देखो, इस वाले शूज में भी कोई दिक्कत नहीं है जो आपने अभी पहना है, ओके सर. लेकिन थोड़ा सा बेटर होगा अगर आप लेस वाला शूज वहाँ पे पहने, क्योंकि लेस वाला थोड़ा फॉर्मल टच में आता है, Okay, विदाउट लेस वाला इनफॉर्मल में आता है. ओके सर. है ना? लेस वाला पहने, और सॉक्स जो आपका होना चाहिए वो डार्क कलर, मतलब शूज या पैंट से मैच करे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैंट अलग कलर, सॉक्स अलग कलर, रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए वहाँ पे. यस सर. ठीक है. बाकी सर ने आपको बता ही दिया, सर खुद 3 टाइम IAS क्वालिफाई कर चुके हैं, Okay, sir. पूरा इंटरव्यू मिला के, और जॉब भी करा है अलग अलग डिपार्टमेंट में. उसके बाद एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगी, वो ये कि आपका इंग्लिश अच्छा है. यस सर. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है आपका इंग्लिश अच्छा होगा जो वहाँ पे UPSC देने वाले हैं, 480 बच्चे सिविल के. हाँ सर.
लेकिन फिर भी आप अचानक से हिंदी में आए। अब हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंग्लिश मेरे से भी अच्छा है, हिंदी में आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश सही था और आपसे सारे लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब अपन को हिंदी में नहीं आना है, तब उसी बच्चे को हिंदी में आना है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल थे और आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है। वो उसी को हिंदी में आना है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, पर आपके साथ वाला केस नहीं है। हाँ, कोई अगर हिंदी में सवाल पूछे तो वो अलग बात है। नेक्स्ट ये कि ना सब कुछ सही जा रहा था, मेरे को लगा कि आप एकदम फर्स्ट आएंगे इंटरव्यू में, लेकिन ना एक बार जैसे मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, जैसे सर ने भी आपको बोला ना। और कोइंसिडेंटली जब आप बाहर गए थे तो मैं सर से भी डिस्कस कर रहा था, उनका भी वही पॉइंट था। अब हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन आप इसका बुरा मत मानना, ये सब इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो अदरवाइज हम क्यों बताएंगे आपको, है ना। जैसे आपका सर का कोई और क्वेश्चन था जिसमें सर ने ऑब्जर्व किया, मैंने किसी और में ऑब्जर्व किया है। जैसे वो क्वेश्चन था कि जोशीमठ या शिमला में क्या है, एक बच्चा जवाब नहीं देगा तो हमको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपने डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल बोला ना लैंडस्लाइड्स के लिए, हाँ सर, लेकिन डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल से तो हमें सिग्मा बार बढ़ेगा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना कांटेक्ट फोर्स। हाँ सर, तो वो वाला थोड़ा सा मतलब लगा कि ये सही नहीं है। अब जैसे पिन कोड का आप दे रहे थे, तो आपने पिन कोड का कुछ बोला, मेरे को खुद नहीं आता पिन कोड ना, मैं खुद उसमें नहीं हूँ। सर ने कुछ पिन कोड बोला कि शुरुआत का 2, 4, 2 जो भी है। अब आपको ऐसे, अगर आपको कभी क्वेश्चन आपको पता है कि शुरुआत के 2 किसी चीज पर रेफर करते हैं, बाद के 4, तो आपको ये नहीं बोलना है कि, और आप श्योर नहीं हो, तो आपको ये बोलना है कि सर वो 6 कोड का सिग्निफिकेंट होता है, सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द जो भी स्टेट, या सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन, सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द रीजन। पर मेरे को ये नहीं पता है कि कौन सा डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप वाला जो भी आपने बताया वो सही नहीं है ना। तो वो बहुत मजा आएगा यार इंटरव्यू को, कि यार देखो बच्चे को नहीं आता था, एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने हमें ये बता दिया कि कुछ डिजिट इसको रिप्रेजेंट करती है, कुछ डिजिट इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे तो सही। बाकी आपके प्रीलिम्स में कितने आ रहे हैं वो बताना है। सर प्रीलिम्स में मेरे 255 आ रहे हैं, और मेंस में कितने का अटेम्प्ट है? मेंस में मेरे अटेम्प्ट 560 है सर, जिसमें से 420 से 450 20 का लगा लेता हूँ मैं, 430। ठीक है, हाँ सर, तो 680 बन गए। पिछली बार कट ऑफ थी 756, यहाँ सर, है ना, और पिछली बार लेकिन पेपर में बहुत टफ आया था, लेकिन इस बार सीट बढ़ गई है, तो वो दोनों इफेक्ट कैंसिल हो गए। इस बार पेपर आसान है लेकिन इस बार सीट ज़्यादा है, तो कैंसिल हो गया। तो 680 मतलब सिलेक्शन तो हो ही रहा है आपका। हाँ सर, तो वो तो आप चाहे आज मिठाई खिलाओ चाहे उस दिन खिला देना रिजल्ट के बाद, सिलेक्शन तो हो रहा है आपका। सिलेक्शन होने के लिए मेरा कैलकुलेशन है, आपको 90 नंबर चाहिए। 90 इंटरव्यू में 99% बच्चों को मिलते हैं। अब 1% में आप जाते ही वहाँ पे इंटरव्यू वाले को गाली दे दो तो अलग बात है, नहीं तो सिलेक्शन हो रहा है। अब सिलेक्शन हो के आपको ये स्किल वाला मिलेगा कि सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस मिलेगा कि डिफेंस मिलेगा, वो पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक बच्चा ना, ज्यादातर क्या है कि आप कभी भी बच्चों को रिजल्ट एनालाइज करना, प्रीलिम्स में 90% बच्चे जो सिलेक्ट हुए, 90% वो बच्चे नहीं, 90% बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनके मार्क्स 240 से लेके 265 के बीच में आ रहे होंगे। हालांकि कट ऑफ 230 के आसपास है, अभी यूपीएससी ने बताया नहीं, पर अपन को पता चल जाता है, आपको भी पता ही होगा 228 के आसपास कट ऑफ है। तो 230 से 260 के बीच में 90% बच्चों के मार्क्स होंगे। प्रीलिम्स में कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता। इंटरव्यू में भी आपको पता है कि 90 से कम भी यूपीएससी किसी को नहीं देता, 170-80 से ज्यादा भी किसी को नहीं देता, 90% बच्चों को 110 से 145 के बीच में देता है। प्रीलिम्स में कोई नहीं होता, और इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा 30-35 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। सारा खेल होता है मेंस का। तो हाँ, मेंस में किसी ने पेल दिया होगा अच्छे से, तो उसका इंटरव्यू में 90 भी आएगा, तब भी वो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस लेगा। पर अगर मैं उस चीज को अभी एवरेज मानूं आपका और बाकी का, तो अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो डायरेक्ट आप डिफेंस सर्विस से ऊपर ही आपको मिलना चाहिए, तो आईडीएस मिलेगा या रोड या सीएस, वो आपका इंटरव्यू पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो वैसे तो सर ने जैसे बताया, एग्जैक्टली यही डिस्कशन हम कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया तो आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है, आई वाज थिंकिंग कि बेस्ट जाएगा आज का। बट फिर उसके बाद जो थोड़ा सा आप हटके ना उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आता, जैसे सर ने कहा एक तो वो तो है ही, उसके लिए आप ये कहो सॉरी आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई। तो ऐसा करके करोगे, फिर थोड़ा गलत भी होगा ना तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो आपने बताया बहुत कॉन्फिडेंस से, बट वो गलत बताया, और तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है। उससे लगता है कि मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन यू आर डूइंग, और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो मैनिपुलेट होने के लिए तो नहीं बैठे।
तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और लेग मूवमेंट थ्रू आउट था, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर, वो तो मैं, शूज ले लेना, लेस वाले शूज। हाँ सर मैं ले लूँगा। बाकी अच्छा था कि डेफिनेटली आपका होना नहीं है। तो मेरे को एड्रेस बताना, मैं भिजवाऊंगा फ्लिपकार्ट। सर उसके चार्जेस ओके ओके, वो सौरभ ओके कह रहा है, ये नहीं कह रहा मैं ले लूंगा। नहीं सर, मैं ले लूँगा सर। और मिठाई रिजल्ट वाले सर मैं दे दूँगा अगर हुआ तो। ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं। आपने अबाउट योरसेल्फ बहुत अच्छा बोला, बट द वे यू स्टार्टेड आई एम सौरभ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि हाँ सर। नाम ऐड करने की ऐसे कोई जरूरत थी नहीं। ओके सर। बाकी करोगे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक प्रिपेयर्ड आंसर होना चाहिए कि आपको कोई आके पूछेगा तो थोड़ा पता होना चाहिए क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना है, यस सर। है ना। और बाकी तो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप थोड़ा और रिवाइज करेंगे। हाँ सर। टेक्निकल में ब्लफ नहीं कर सकते। और एक चीज मैं नोटिस करी, लास्ट में आप उन चीज़ों पे आए भी, जब सर पूछ रहे थे तब आपने लास्ट के क्वेश्चन में कहा सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट शुरू में आपने कहा कि चलो जो आता है बता दो, कोई बात नहीं। तो तुरंत जज कर लेंगे वहाँ। मतलब जैसे मतलब जो आपका टेक्निकली आप साउंड नहीं भी बता रहे हो ना, आपको ऑलरेडी चेक हो चुका है प्री और मेंस में, जैसे आप ब्लफ करोगे ना वो जज कर लेंगे। हाँ और जज के ये ओवर स्मार्ट बनने में ना नंबर कम हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा हम्बल रहना है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना है और देना है आपको फुल कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया। आप यहाँ समझो, मतलब यहाँ पर आपका टेक्निकल चेक नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली वही चेक हो रहा है कि थोड़े एथिक्स लगा लो, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा लो, पर्सनैलिटी टेस्ट लगा लो। हाँ सर। तो वो सब चीज़ें, तो टेक्निकल एवरेज भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूज़पेपर पढ़कर आए थे आज? सर मैं हेडलाइंस पढ़ के आया था और बेस्ट न्यूज़ मुझे क्योंकि देखो अगर आप आपकी हॉबी है तो ये 100% यार, जब इंटरव्यू के सामने है तो आपको पेपर कहीं से भी खरीद के मतलब वो करना है। मतलब आपको जब सर ने पूछा ना तो आपको फटाफट 5-7 पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि जस्ट चेक होता है। रीडिंग न्यूज़पेपर है ना। वहाँ पर भी रहेगा, यूपीएससी ऑफिस में भी ना सब पेपर्स पड़े होंगे वहाँ पर, तो फटाफट जो भी 2-4 न्यूज़पेपर जो आपका है ना तो हेडिंग देख कर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा आपके। यस सर। चलेगा। आपके जो मैकेनिकल के एचओडी है ना, वो यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में बैठते थे, आपको पता है? नहीं सर। अच्छा, 2-3 साल पहले मैं एक बार आ रहा था, मैं आता रहता हूँ श्रीनगर, हाँ सर। तो वो बगल में मेरे फ्लाइट में बैठे थे, तो वो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर थे। आप में नहीं होंगे, वो मैकेनिकल वाले में होते हैं। ओके सर। सौरभ, आप हर पॉइंट्स के लिए आपने 4-4 लाइन लिख ली है डीएफ में, जितनी भी चीज़ें भरी आपने? सर मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं लेकिन हाँ। लूजली ऐसे ही, मतलब लूजली मत करो, क्योंकि ना ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, इसमें से आपने कुछ भी लिखा है ना, अगर आपने से पेन से पॉइंट भी डाल दिया है हाँ तो वो भी पूछा जाएगा पॉइंट क्यों है यहाँ। मैं समझ रहे हो इसकी sir. इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आप हर लाइन पर जाइए। कब है आपका इंटरव्यू? सर मेरी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर। वी हैव इनफ टाइम। और भी मॉक देना चाहोगे आप? सर हाँ मैं ये दूंगा। पहला था मॉक आपका ना? हाँ सर। हाँ, तो आपको पहले मॉक के हिसाब से तो काफ़ी इंप्रूव किया आपने, और हर पॉइंट्स के बारे में लिख लीजिए। ओके तो हर पॉइंट्स पे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल ब्लफ नहीं करना, टू द पॉइंट आप आंसर दीजिए, और ऐसा आंसर तैयार करो कि उस आंसर में से फिर क्वेश्चन पूछ सके कोई। हाँ सर। ठीक है ना? जैसे आप भुवनेश्वर के जू के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे मैं ये भी पूछ सकता हूँ, वहाँ पे जो अभी फेमस टाइगर उनके नाम क्या है? हाँ सर। हो सकता है मैं रिसेंटली घूम कर आया हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कुछ फेमस है क्या वहाँ पर। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है? काफ़ी हाँ सर। ओके। ओके ठीक है सर, आपका कोई क्वेश्चन और? आप कुछ पूछना चाहो? सर जो चीज़ मतलब जैसे टेक्निकल में भी था सर, वो 50-60% आता रहता है, तो उससे जाने देना है सब। नहीं, तब आपको बोलना है कि मेरे को ये मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत आता है उतना बता दूँ, तो नहीं बोलेंगे हमेशा, तब आप बता दें। आप ये वैसे तो आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई वुड लाइक टू ट्राई। हाँ, वो आपके आंसर बताने के बाद बाद पूछा पूछा। मैंने, हाँ, है ना? आंसर बताने के बाद पूछा मैंने, लेकिन वो आपको पहले बोलना था कि मैं ऐसा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ ऐसा ऐसा। वो आप समझ गए ना, एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। हम फॉर्मूले में नहीं आता, पर वो एफ में अंदर छुपा हुआ है। यस सर। बाकी आपका टेक्निकल अच्छा है, 26 से 29 आपका ऑल इंडिया रैंक है, 1000 बच्चों में आप लास्ट के कुछ 100 बच्चों में पहुंच गए हो, तो आपका तो टेक्निकल मतलब उसी हिसाब की वो भी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है, वो देखते हैं। आप टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट्स इंडियन
9.1%। आपका कॉन्फिडेंस तो आसमान फाड़ देना चाहिए, पर अंदर बाहर से ऐसा नहीं कर सकते कि थैंक यू।